Dear students, today we will discuss the short story written by Satyajit Ray. The name of the short story is The Scarecrow. Today we will discuss its theme, summary, and we will know something about the author. And the next lecture, we will do the solved questions on this short story. Now, first of all, let us know something about the author. Satyajit Ray was born on May 2, 1921 in Kolkata, and he died on 23rd of April 1992 in Kolkata. Okay, so far as his height is concerned, it is 1.93 meters. So the books he has written, it is the Complete Adventures of Feluda and more books also. Awards he has won: Academy Honorary Award, Bharat Ratna, and many other awards. He was an Indian film director, writer, and illustrator. He was one of the greatest filmmakers of the 20th century. Satyajit Ray was born in Kolkata into a Bengali family which was prominent in the field of arts and literature. Now let us come to the theme of this story. The short story written by Satyajit Ray revolves around the theme that we should not rely on quacks and illiterate people and witchcraft. It also tells us that truth can never be concealed, though it may take a long time to come to the fore. It also gives us to understand that labeling of charges on anybody without proper investigation is not a welcome step, and that poverty of anybody does not necessarily compel him or her to resort to any uncalled for means. Okay, now let us come to the summary of the short story. Mriganku Shekhar Mukhopadhyay was a popular writer from Calcutta. He got stranded near a paddy field as he was about to reach Panagarh. He was on his return journey from Durgapur. His driver Sudhir went to Panagarh to fetch petrol, and he decided to stay back. After the driver left, Mriganku Babu got out of the car and lit a cigarette. It was the end of January. The empty, barren field stretched for miles. In the far distance, a small hut could be seen standing next to the tamarind tree. There was no habitation around. On the western side, there was a pond about 40 feet away from the road. There were two huts, but no sign of people there. In the middle of the field was a scarecrow. There was Mriganku Babu saw that the scarecrow was wearing a painted shirt. He felt as if he had seen that torn red and black printed shirt before, but he failed to remember it. Yet he felt sure that he had seen someone wear such a shirt a long time ago. In the meantime, the sun was setting and it was getting dark. For some inexplicable reason, Mriganku Babu continued to feel strongly drawn towards the scarecrow. He looked steadily at it. In a few minutes, he noticed that the appearance of the scarecrow had changed somewhat. The two arms had been lowered a little, and it was standing a little less stiffy and more like a living man. And soon he found the scarecrow moving and advancing towards him. It was walking with a limp. It had a real human head, but it still had the same shirt on and a short, slightly dirty dhoti. When the wearied, when the wearied figure addressed Mriganku Babu as Babu, a tremor shot through his body. Mriganku Babu recognized that it was the voice of his servant Abhiram, who was thrown out of his job on the charge of stealing a gold watch that he received as his wedding gift. In fact,
Abiram was not the thief, but nobody believed him. Besides, when Mriganku Babu's father called a local witch doctor who cast a spell and made an ordinary wicker tray spin and rotate until it stopped pointing at Abiram, there was no room for doubt that Abiram was the thief. Abiram told Mriganku Babu how he died after being uh, how he died after being afflicted with dropsy. He again pleaded in innocence about the theft. He asked Mriganku Babu to look for the watch under his wardrobe at his house. After that, the figure Abiram disappeared before Mriganku Babu's eyes. So this is the story. Tomorrow we shall be doing the solved questions of this lesson. लेकिन इससे पहले मैं आपको इस कहानी के बारे में थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूँ. शॉर्ट स्टोरी जो है ये सत्याजीत की लिखी हुई कहानी है और इसका मरकज़ी ख्याल ये है कि ये एक ऐसे मरकज़ी ख्याल के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि हमें किसी भी सूरत में जादू टोने या अंधी तकलीद के पेश नज़र बाकी यानी किसी बात पर ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए हकीकत के बगैर. और ये बात ये भी आगे आ जाती है कि हमें सच को किसी भी सूरत में हम नहीं छुपा सकते हैं. सच आकर सच ही होता है और वो किसी भी सूरत में कहीं से भी आगे आ जाता है और हमें उस सच्चाई का पता चल जाता है, गो कि उसमें थोड़ा सा वक्त भी लग जाता है. दूसरी बात यह है कि हमें किसी बात पर बिला तहकीक के बिला सबूत के यकीन नहीं करना चाहिए. और ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग गरीब होते हैं वो चोर होते हैं या वो चोरी करते हैं. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कहानी शुरू होती है ये कलकत्ता का रहने वाला होता है. कलकत्ता पहला नाम कोलकाता का पहला नाम कलकत्ता था, तो अब इसका नया नाम बदल के इसको कोलकाता कर दिया गया है. जिस तरह से इलाहाबाद को अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, बहुत सारी सिटीज़ जो है उनका नाम बदल रहा है. इस तरह से कोलकाता जो है अब पहले कलकत्ता कहा जाता था. यहाँ पे एक आदमी रहता है कलकत्ता में, उसका नाम होता है मृगांकु शेखर मुखोपाध्याय. वो एक जाना पहचाना राइटर होता है. वो उसकी कार जो है वो एक जगह पे तेल ख़त्म होने की वजह से रह जाती है. वहाँ पे एक शालियों का एक खेत होता है, धान का खेत होता है, धान के खेत के बीच में फंस जाती है. और वो पन्नागढ़ से उनको पन्नागढ़ पहुँचते पहुँचते अभी देर हो जाती है. तो उतनी देर में क्या है कि उसका ड्राइवर जो होता है सुधीर, वो पेट्रोल लाने के लिए चला जाता है. ओके, चूहे ड्राइवर चला जाता है तो मृगांकु बाबू अपनी कार से बाहर निकल जाता है, एक सिगरेट जलाता है. जनवरी के आखिरी दिन होते हैं, तो वहाँ पे जो नंगे नंगे दूर दूर तक खेत होते हैं वो दूर से दिखाई देते हैं. वहाँ उनके अंदर एक तमरहिंदी का एक दरख्त भी दिखाई देता है. इर्द गिर्द कोई बस्ती भी नहीं है. और इस खेत के मगरिबी साइड में देखते हैं कि कोई 30-40 फुट रोड जो है कि दूरी पर वो देखता है कि कुछ एक दो मतलब हट्स झोंपड़ियाँ नज़र आती हैं, लेकिन वहाँ लोग नहीं हैं. इसी तरह से वहाँ देखता है कि वो छज काग जो होता है, जो चिड़ियों विड़ियों को हटाने के लिए, जिसको हम कश्मीरी में जो यहाँ पे होता है वो जिसको हम सिकेर क्रो कहते हैं, वो इंग्लिश में छज काग होता है. पुतला होता है, एक पुतला सा होता है, जैसे कोई शर्ट आपने टांग दी कहीं पे लकड़ियों पे, उसके ऊपर कोई हांडी सी रख दी, तो दूर से धोखा लगता है जानवरों को, परिंदों को कि ये कोई आदमी वहाँ बैठा है, तो वो भाग जाते हैं. तो उसको सिकेर क्रो कहते हैं. मृगांकु बाबू देखता है कि सिकेर क्रो जो होता है उसने एक पेंटेड शर्ट लगाई हुई होती है, प्रिंटेड शर्ट, और वो याद करता है कि ऐसी शर्ट उसने उससे पहले भी कभी देखी है. तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, वहाँ पे सोच में पड़ जाता है. वो कभी कार के अंदर घुस जाता है, कभी कार से बाहर निकल जाता है, ये सोचता है कि मैं कुछ लिखूंगा. अचानक उसके जहन में ख्याल आता है कि जैसे उसको लगता है कि अचानक क्या हुआ कि लेकिन वो इस छज का की तरफ, पुतले की तरफ इसका रुझान बार बार जाता है. वो सोचता है कि मैंने इसमें कुछ देखा है. तो आहिस्ता आहिस्ता उसने लगातार उसकी तरफ कुछ मिनट देख लिया, तो उसने देखा कि इतनी देर में ये छज का जो है पुतला जो है उसकी शक्ल थोड़ी सी तब्दील हो जाती है. उसके जो आर्म्स बाहर की तरफ निकले हुए थे वो थोड़े से स्टिफ हो गए. उसको लगा कि जैसे कोई ज़िंदा आदमी है. और इसी तरह से उसने देखा कि उसने वही
ایک شرٹ پہن رکھی ہے اور ایک تھوڑی سی گندی سی ایک دھوتی پہن رکھی ہے. تو جب وہ کوشش کرتا ہے کہ دیکھنے کے لیے، اتنی دیر میں آتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ جو سکیر کرو ہے وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے اور اس سے بابو کے نام سے پکارتا ہے. تو مگان کو بابو تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ جیسے اس کا نوکر جو ابھی رام تھا، اسی جو ابھی رام کو پہچان لیتا ہے، کیونکہ ابھی رام کو انہوں نے اپنے گھر سے باہر پھینک دیا ہوتا ہے اس بنیاد پر کہ اس نے ایک سونے کی گھڑی وہاں سے چوری کر لی تھی، جو سونے کی گھڑی مگان کو بابو کو شادی کے موقع پر تحفے میں ملی تھی. لیکن ابھی رام حقیقت میں چور نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ لیکن اس کو کی طرف کسی کی کو دھیان نہیں ہوتا ہے، کوئی بھروسہ نہیں کرتا ہے ابو رام کو. اور کیونکہ وہاں سے ایک جادو ٹونا کرنے والے آدمی کو بلاتے ہیں، وہ وہاں پہ وہ کچھ منتر شنتر پڑتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی ہے جس کو وہ سپن کرتا ہے اور وہ اشارہ کرتا ہے ابھی رام کی طرف، اور ہر گھر کا ہر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ ابھی رام چور ہے. لیکن ابھی رام نے چوری نہیں کی ہوتی ہے. وہ مگان کو بابو کو یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ اس کے بعد وہ مر گیا ہے، یعنی اس کو ڈراپسی کی بیماری لگ گئی تھی اور کوئی اس کو کچھ دیکھ بھال کے لیے نہیں تھا. لیکن وہ وہاں پہ اپنی معصومیت ظاہر کرنا چاہتا ہے. وہ مگان کو بابو سے کہتا ہے کہ وہ گھر جا کر اپنی الماری کے نیچے دیکھ لے، اس کی گھڑی وہاں ہی پڑی ہوتی ہے. یعنی یہ آتما بولتی ہے کہ گھڑی وہاں پڑی ہوئی تھی. اگر آپ کے نئے نوکر کو پتہ چل جاتا تو وہ وہاں سے اس کو لے بھی سکتا تھا. تو مگان کو بابو آ کر کے اس گھڑی کو دیکھتا ہے اور اس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی پر بلا شبہ، یعنی بلا شک و شبے کے بلے یا تو کسی پر شک نہیں کرنا چاہیے ثبوت کے بغیر. اور اتنی دیر میں مگان کو بابو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے جو پتلا ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے.